गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। सत श्री अकाल एंड वणकम। आज हम एक टॉपिक लेंगे, डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र। ये टॉपिक इसीलिए मैं आई हैव टेकन इट अप बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग, सर सांगपो के ऊपर जो डैम है उसका क्या है, इफ यू कुड टेल अस समथिंग अबाउट इट, वगैरह वगैरह। So that is why I thought, let me go over it. Uh, I have already written an article. इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा है अपने गनर शॉट में, और एक दो जगह मैंने जाके ये प्रेजेंटेशन दिया भी है, और आप वहाँ भी देख सकते हो, पर यहाँ भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर जितने भी आपके सवाल हैं वो मैं आंसर करूँगा, और इसके अलावा अगर भी सवाल है तो हम आंसर करेंगे। राइट। ओके। सबसे पहले क्या है कि ये ब्रह्मपुत्र का दृश्य है। ये जो लेफ्ट टॉप पिक्चर इज एट सरायघाट नियर गुवाहाटी, वे कैन सी इन द ब्यूटीफुल सनसेट इट इज देयर। द राइट पिक्चर जो है ना, वो एयरक्राफ्ट से एक पिक्चर है ये, और ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर जब आप गुवाहाटी तक पहुंचते हो तो एक इट लुक्स लाइक अ सी, एक विशाल समुद्र लगता है। राइट, ऐसे नहीं लगता कि एक नदी है ये। राइट, इससे ज्यादा प्रभावित मैं आज तक जिंदगी में कहीं नहीं हुआ, और मेरे को इस नदी के साथ काफी लगाव है। मैं हर जगह जाके इसको देख चुका हूँ। काफी जगह we gone up to the LAC to see this. So it's a very good river and it's a fantastic river. Or that this river defines the character of people in the Northeast to a large extent. Okay. ये पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि why Tibetan plateau is not only called the roof of the world, it's also called the water tower of the world. क्योंकि जितने भी नदियां हैं, मेजर नदियां एशियन कॉन्टिनेंट के, यहाँ से शुरू होता है। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडस यहाँ से शुरू होता है, उसके नीचे सतलज शुरू होता है मानसरोवर से। राइट, उसके बाद गंगा यमुना वगैरह इस इलाके से शुरू होता है, पर मेन मानसरोवर के इलाके से इंडस जाता है नॉर्थवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स, गंगा नीचे आता है, और ब्रह्मपुत्र यानी यारलुंग सांगपो जो बोलते हैं वहाँ, वो ईस्ट को चला जाता है, और ईस्ट को जाके असम के पास मोड़ के वापस आ जाता है बांग्लादेश में। गंगा के साथ मेल मिलाप हो जाता है इसका। अच्छा, इसके अलावा जो दो मेजर रिवर हैं, साल्विन जो है टिबेटन प्लेटो से शुरू होता है और वो मेन बर्मा के अंदर जाता है। राइट, और मीकोंग जो है वो भी वहां से टिबेटन प्लेटो से आता है, और ये काफी कंट्रीज को इट सर्व्स, यानी लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इन तीनों कंट्रीज के है। और अचंबा की बात यह है कि ये तीनों तकरीबन लाओस और कंबोडिया जो है वो चाइना के चाहते हैं। राइट, चुनमुन जो बोलते हो। राइट, पर उनको भी चाइना पानी नहीं देता। आगे मैं दिखाऊंगा कितने डैम उन्होंने मीकोंग के ऊपर बना दिया और वहां से पानी निकाल रहे। इसके अलावा दो और रिवर हैं, जो नदी है जो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है यांगजी, और दूसरा है येलो रिवर या हुआंगवी। ये दोनों ऊपर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो तिब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, इसीलिए तिब्बत को नहीं छोड़ेगा वो। जिस दिन तिब्बत को छोड़ दिया, चाइना का सब कुछ ठप हो जाएगा। राइट, ये पुराने जमाने में इनको पता नहीं था, आज के जमाने में इनको बिल्कुल ये छोड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं है। राइट, ओके। ये क्यों चुरा रहे हैं पानी, क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ओके, अगर आप देखोगे ये राइट है, जो गुवाहाटी के आसपास सरायघाट है वो इलाका है नीचे। राइट, चाइना आता है सीधा, सांगपो सीधा अलोंग द बॉर्डर चलता है, तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर दूर तक
और लास्ट में जाके मोड़ लेता है, उसको बोलते हैं बिग बेंड। जांगमो जो वहां दिखाया है वो एक डैम है, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और फिर नीचे ब्रह्मपुत्र जो है नीचे प्लेन्स में आ जाता है और जिस तरीके से है वो चला जाता है। राइट, ये सिर्फ आपको दोबारा याददाश्त ठीक करने के लिए। राइट, अभी हम देखेंगे ये, हम लोग सब सोचते हैं कि चाइना जो है ब्रह्मपुत्र का पानी चुरा रहा है, उसमें पानी कम हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक उसको समझने वाली बात है। अगर आप देखेंगे तो ये जो मैप है ये ब्रह्मपुत्र बेसिन को दर्शाता है। अगर आप बीच में देखोगे हिमालय और ट्रांस हिमालय है, और उसके ऊपर एक लाइन है जो हिमालय का लाइन है और उसके आगे है। अभी दोबारा दिखाऊंगा। अगर आप देखिए ये जो ब्राउन लाइन है वो हिमालय का लाइन है तकरीबन। राइट, हिमालय के लाइन से बहुत नदियां जो ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं वो हमारे ओर आते हैं, और उस साइड जो है बहुत कम नदियां हैं जो सांगपो को फीड करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रह्मपुत्र का जो मैक्सिमम कलेक्शन है पानी का वो हमारा साइड में है। अगर जो भी आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको पता होगा, या सब बोलते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र जो है ना एक अकेला नदी नहीं है, वो 7 नदियों का मेल है। राइट, ओके। वो सबसे पहले बाएं देखे वो उसको बोलते हैं सुबानसरी, उसके बाद आता है सियोम, राइट, उसके बाद आता है सियांग, उसके बाद आता है दिबांग, उसके बाद आता है दलाई, उसके बाद आता है ताऊ, दाऊ दाऊ, राइट, और लास्ट में है लोहित। तो 7 नदियों का मेल है जो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। ओके, मेन जो ये है कि ये सैंगपो से आता है, वहां ग्रेट बेंड में मोड़ लेता है और नीचे आता है एस सियांग, उसको बोलते हैं सियांग। एक जगह है केपांगला, केपांगला में ये उतरता है नीचे, और वहां बहुत बढ़िया वाटरफॉल है उस इलाके में, वहां से उतर के आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। राइट, सुबानसरी, सियोम, दिबांग, दलाई और दाओ में भी काफी मात्रा पानी होता है, और ये सब एलएसी के इस पार इसका where it starts, the start point of all these are this side, and this lot of rivers get water from the Himalayan belt on our side, right? उसके अलावा लेफ्ट में भी हैं कुछ, भूटान में भी कुछ, कैमेंग है वो जो वेस्ट कैमेंग डिस्ट्रिक्ट है बुमला के पास, वो भी आके ब्रह्मपुत्र में पानी देता है। एक नदी है लोहित। लोहित जो है वो चाइना से शुरू होता है, जैसे हमने देखा सबसे राइट, और वो आके चाइना से, चाइना मतलब तिब्बत ही है, वहां से एंटर करता है, और ये लोहित के अंदर दाऊ दिलाई मिल जाता है। आगे आके एक जगह है हेमकुंड, और वहाँ मेन ब्रह्मपुत्र बन जाता है। उसके बाद दिबांग मिलता है, उसके बाद सियांग आके मिलता है, और ये जो सियांग और मेन चैनल का मेल है वो पासीघाट में होता है, और उसके बाद इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो सियांग जो है, राइट, जैसे ये इसलिए सबको बता रहा हूं, तो राइट, ये जो तिब्बत से जो पानी आता है सियांग के जरिए वो तकरीबन 15% का पानी है, उससे ज्यादा नहीं है। राइट, तो हम सब सोचते हैं कि वो पानी चुरा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं है। मतलब चुरा तो रहे, दे आर स्टीलिंग वाटर, ऑन दैट देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। Will it affect us? It will not affect us. It will not affect us for water, but it will affect us for other things. That's what I'll come to know. Okay, now I'll take a sojourn. ये अभी छोड़ देते हैं, चाइना ये क्यों कर रहा है? That's the main thing, right? ये मैं आपको बार बार I have told you that China has 20% of the global population, but it is only 6% of total fresh water, right? And it is badly affected by climate change. It doesn't have water. It's a water deficient nature. It has very less arable land also. That is why
its food security is a problem, right? Water security or water shortage will threaten the very basis of Chinese civilization. Now, when a country becomes modern and industry and everything and urbanization and all takes place, uh, it needs a lot of water. Industry needs water. इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए हमें पानी चाहिए, वो पानी इनके पास नहीं है, इसीलिए ये सैंगपो से पानी ले रहे हैं। वो लेक बाइकल से ऊपर से भी लेके आने के चक्कर में टकला मकान के ये दोनों इन्होंने शुरू किया। अगले 20 साल तक चलता रहेगा। कितना पानी ये ले पाएंगे, क्या होगा, हमें पता नहीं, बट ये पानी ले रहे हैं। अगर ये पानी नहीं लेंगे तो इनका प्रॉब्लम। ओके, इनके पास क्लाइमेट चेंज का भी बहुत प्रॉब्लम है चाइना का। मैंने पहले भी बताया, ड्राउट्स एंड फ्लड्स हैव बीन एंडेमिक इन चाइना फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। Many Chinese dynasties have collapsed due to drought, famines and floods. Right, right. ये जो है उस वक्त की बात है जब पिछले साल ड्राउट चल रहा था। बात यह है कि 2 साल के अंदर इसमें फैमिन फ्लड हो गया और ड्राउट भी हो गया और इनको बहुत प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में ये जो तिब्बत का पानी के बिना ये तरस जाएंगे। क्या हम इस पानी को रोक सकते हैं? फिलहाल नहीं। क्या आगे जाके रोक सकते हैं? मौका ढूंढना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो ये है चाइना का वाटर सिस्टम। ऊपर येलो रिवर हवांगी, बीच में यांगजी बेसिन और नीचे सबसे नीचे है जी रिवर, राइट। पिछले साल इनका इतना ड्राउट पड़ा कि इनके मेन शहरों के थ्रू पानी सूख गया, पानी नहीं था, राइट। ये हालत था इनका। ओके, और ये भी है इस साल का प्रेडिक्शन ये है, इस चाइना प्रिपेयर्ड फॉर बेटर एंड वार्मर एंड बेटर फ्यूचर। इस आर्टिकल में अगर आप साउथ चाइना पॉइंट पोस्ट में देखेंगे तो ये बोल रहा है कि चाइना का इट विल बी फ्रॉम नाउ ऑन, इट विल बी सब्जेक्ट टू cycles of droughts and famines. That's almost certain. In fact, at this point of time, Yunnan province में they're having a drought. In fact, they have cut down electricity supply to many other industries. So they have a major problem, and they cannot get out of it. Okay, this is thing in this article. They said China wants of more extreme weather in 2023. आप देखिए कितना सूखा पड़ा है. Okay, yeah. No, flooding also happens there. This is another thing. This was the year before last where there's extreme flooding in China. So between extreme flooding and droughts, it's going to get hit. Now the interesting part of this whole story is that as it industrializes and it goes more, it needs more water or everything, the damage due to flooding or droughts is multiplying. If 10 years back their loss was say $10 billion, this year, 10 years later, it is something to the tune of $100 billion. Because more industrialization, you need more water. And they have this problem. Okay. This is the Yangtze Basin. And what is in pink in the center is the Three Gorges Dam and its catchment area. And last year, Three Gorges Dam had come down to dead water levels. In fact, the year before last, they had to break some dams to ensure the Three Gorges Dam doesn't break and doesn't overflow. This is the problem they've been facing. And this will not run away. That is already certain. Yeah, once it might be this way, once it might be that way, but overall there's going to be a problem. Okay, what is China's track record? Have a look. This is the Three Gorges Dam ka picture hai. Now, China's track record is dismal. Their great leap forward resulted in a famine. One-child policy has resulted in aging China. Three Gorges Dam, which was built basically to store water and prevent flooding and all, has not prevented. So if you think that by diverting Sangpo River, what little water
they can divert down to this thing. No, their track record is pretty poor on this. And what's more, we do not know how much water they can take. We do not know what is the thing, but that I will just touch upon a little later. Okay. Now this is the Mekong Delta, right? If you see, देखिए इसमें कितने डैम है आगे, और ये सारा डैम इन्होंने ऊपर डाल दिया, और मेकॉन्ग में लाओस और कंबोडिया और कुछ हद तक वियतनाम में भी आता है, इसमें पानी कम आता है। और कंबोडिया और लाओस उनके चुनमुन है, उनको भी नहीं देते पानी ये, राइट? इतना प्यासा देश है ये। ओके, okay, we'll just come back to China's dams on Brahmaputra. I know you cannot see it. This is a India Today ka picture, uh, image, right, where it is all given. Let's show it on a map. इतने डैम हैं इनके, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ constructed है. Totally they're likely to have about 14-15 dams, right? But the problem which is going to happen for us is that last dam on the bend, Great Bend. और सबसे राइट में जो बेंड के बाद जो आता है, that is the dam which is going to create problems. Because if they store water upstream of this and tap it from there, because that's the lowest and you can take water easiest from there, then Siang gets affected. Luckily, only Siang gets affected. Okay, so what will be the effect on Siang? Siang में जो वातावरण है, ecology है, all that, the wildlife dependence, all that will get affected. Right? How do you stop this? The only way to stop is you put another dam. See, the thing about Shangpo is China can't just block all water. It's beyond them. So there will be always overflow of water. And that overflow of water, when it comes to your side, you dam that also. You have your own dam. And then you keep releasing water into Siang depending on the inflow. You adjust it in a manner so that your downstream of Siang doesn't get affected ecologically or otherwise. That's the only way. There's no other way, because China मानने वाला नहीं है. Let's be very clear. Okay. और ये भी बात सही नहीं है कि ब्रह्मपुत्र में कल के दिन पानी खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता, right? So, but that thing where it enters Kepangla and it comes down to Pasighat, that entire Siang through Arunachal Pradesh, which is about 200-250 kilometers, is at risk. And for that, you have your own dam. That's the only way. I think people are thinking that way. I'm sure people who have more knowledge than me are उस तरीके से सोच रहे, right? But problem ये नहीं है actually. Actually problem है, this is in a all these are in a earthquake prone zone. Okay, आप हम सबको पता है कि the Himalayan plate or mountains are porous. When you keep a body of water, and if you store water along the Sangpo, firstly, the water weight increases. When the water weight increases, it starts seeping down. And when it goes into the cracks, it pressurizes the subterranean fault lines. And one day you'll have an earthquake. That's the simple thing. And why this is almost expected is somewhere in China, they had this problem where they made an artificial dam, they had a lake, everything, and they had a massive earthquake. I don't remember which place. And later it was known that this water had seeped underneath, it had put pressure on the fault lines underneath, and you had an earthquake. And that, when it happens here, हमारा आबादी will get affected. उनका क्या है? So that is the thing we should, put pressure through international forums, etc., to sort this issue out. Right. Then, of course, there's the issue of climate change. This is a landslide which happened in a place called Choglam Sar in Leh. Why am I showing you this? लेह में जब हम पहले जाते थे, वहां पानी नहीं होता था, वहां बरसात नहीं होता था, कुछ नहीं होता था.
पर आजकल क्या है, क्योंकि हम पानी स्टोरेज, वाटर यू नो कंजर्वेशन वगैरह हम कर रहे हैं, तो व्हेन यू हैव वाटर बॉडीज along this place, there is local circulation. If there is local circulation and local rains and flash floods, you'll have mudslides and flash floods. That problem will increase. And the problem will be more for our side than the Tibetan side, because the Tibetan side is flat and it is more stable. On our side, it is not. So, our side of the Himalayas will get affected by all the dams. I'll just show you. See the number of dams. See the number of dams. They're all opposite, mostly opposite Arunachal Pradesh. So if water collection takes place, local convection takes place, and वहाँ local flash flood वगैरह हो जाता है, so we have problems. Okay, right, right. So this is it. Then there is another issue, and this is very interesting. Actually, I didn't even know. Okay, left में जो चित्र है, that is of something called the western disturbance or the western jet stream. In this time, October onwards, this western jet stream flows in. Not this time, somewhere in October or so, it starts flowing. Right? It's a high-speed wind which flows there. Now, now we're going to have monsoons in India. What is monsoons in India? Monsoons in India is a series of low-pressure systems forming at the head of Bay of Bengal, which pull monsoon across the peninsular India, and then the winds continue and go hit the Tibetan massif and come back. On the return, it collects water and comes back. That's the standard thing. Now, if the water, and when it used to come back, it used the northeast monsoon used to pick water from the Himalayas and Tibet and come back. Returning monsoon जो बोलता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी हम बोलते हैं, और वो साउथ इंडिया में हमारा साउथ ईस्ट इंडिया तक तकरीबन वाइजैग से लेकर डाउन तक, ये वी डिपेंड अ लॉट ऑन द नॉर्थ ईस्ट मानसून. यहाँ चेन्नई में तो रेन उसी वक्त होते हैं, राइट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. मेन मानसून सीजन वो है. आज अभी जो मानसून होने वाला है उसमें ज्यादा पानी नहीं आता है. ये जो ये बना रहे हैं डैम्स, वहां इतना बड़ा वाटर बॉडी बना रहे हैं, वो पूरा इकोलॉजी को वहां सॉर्ट आउट करेगा. और ये इकोलॉजी को जब सॉर्ट आउट करेगा, तो ये जो विंड पैटर्न ऊपर नीचे जाएगा, दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड. एंड इफ दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड, your northeast monsoon will get disturbed and you'll have problems all around South India. But इससे भी मजे की बात है, और मेरे को ये पता नहीं ये चाइना वाला कैसे सोचते हैं, this same wind goes and gives water to China. It's part of the same monsoon system. So any tampering of water, the way they are going to build Yarlung Sampo, so many dams, 14 dams, that will be full of water throughout. There's no flow. What will be the effect on the local ecology? Because so much water, there'll be greenery there. If greenery there comes up, will there be a local effect? And then the widespread effect which comes in the Chinese monsoon and our monsoon. I mean, to me, I really don't know whether these Chinese have brains or not. Or do they have any mitigating procedure or not? Right? Okay. Right. There's another interesting thing. One of the biggest problems of this will be downstream effect on Bangladesh. Why? Bangladesh is the lowermost riparian inlet. That's going to get affected badly. As it is, in 2014, जो बाये हैं, that's the आकार of Bangladesh. I saw this in the net, that in 2050, Bangladesh will look like this. There will be some part of Bangladesh which will go due to rise in sea levels. On the left of that, there will be some part of Bengal also which will go incidentally. It's not as if this thing. So we are at risk. And in this risk,
If Brahmaputra ecology changes, there will be change, some change. If that ecology changes, the country which will be affected most will be Bangladesh. And what's more, Bangladesh has a very good equation with China. ये बांग्लादेश वाले कितने बेवकूफ हैं ये भी सोच लीजिए. हम तो बच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. हमें we have to take some precautions. We will be out of this problem. So we have to now itself start building bunds and seawater, you know, walls in lower Sundarbans, and hopefully we'll think, and hopefully we will do it. But that depends again on the Bengal government and the central government कितना एक दूसरे को मदद करेंगे और एक दूसरे का शक्ल देखेंगे. अगर डिवाइसिव पॉलिटिक्स है जिस तरीके से चल रहे हैं, लोग मरेंगे. क्या इसके ऊपर कुछ हो रहा है मेरे को नहीं पता, मैंने सुना भी नहीं. Right? This demands a concentrated action, joint action between the West Bengal, Bangladesh, and the central government to sort this problem out. Right. So I have finished my presentation. It's a small presentation.